Very good morning, respected Sarsha and all classmates. The group, namely Defense on Demand, consists of basically 5 members: I, Sharmeen, Lukman, Alamzeb, and Asmat. Whereas the research topic concerning problems faced by the under trial prisoners, and we conducted research in Huda jail. The purpose of our research was basically to unveil the issues faced by the people behind the bar, and secondly, it was to suggest suitable solutions in accordance with national and international standards, because prisoners' rights are not only enshrined in national protocols, conventions, customs, and treaties, whereas they are also mentioned in international protocols, conventions, like International Covenant on Civil and Economical Rights, International Covenant on Political and Social Rights, Geneva Convention 3, Universal Declaration of Human Rights 1948, the Preamble of United Nations Charter, and so on. The objectives of research was to convert jails into rehabilitation centers. Secondly, it was to spread awareness among people regarding the importance of prisoners' rights, because our people lack this thing that only human beings are only humans, those who are good humans, have fundamental and basic rights. We neglect the mere fact that at the end of the day, prisoners are also human beings. Thirdly, it was to explore jail environment, and fourthly, it was to make jail visits as compulsory part of law colleges. I would also suggest this thing to our institute, because things which are related to legal fraternity and law field, law students shall make their visits possible, because it's very important for law students to see here and there what's very important. Few law students are interested in criminal side, so they should visit jails. Few are interested in customs and other, then they should visit all the fields regarding taxation and so on. We know in fact, you all know the very important maxim of international law, and it's also applicable everywhere, even in this room, that no derogation shall be made upon inhuman treatment. Where I personally believe, where there is no problem, there is no a live society. Problems do exist, but for every problem there is a suitable solution. Undeniably, jails are also conventional to punish wrongdoer. Wrongdoer has got his punishment. Now humanity shall be upheld in each and every case. If I specifically, if I talk about Huda jail, the entire mechanism of Huda jail was regulated by the Prisoners Act 1894. All the 11 central or district jails, rules and regulations were conducted by the Prisoners Act 1894. But one thing which should be noted, that every jail has their own board of conduct. Now, what is board of conduct? Board of conduct is a type of a board which was embedded on their walls, and basically that board was giving them a guidelines that what things are allowed to do and what things are not allowed to do. कुछ प्रिजनर्स एक्ट तो बोलता है कि उनको सब्जी भी दो, गोश्त भी दो, मगर जो उनका कंडक्ट बोर्ड था वो कहते थे कि सिर्फ इनको दाल और रोटी दो. अगर कैपेसिटी की बात करें, हुदा जेल में 470 की कैपेसिटी थी, बट वी वेंट देयर अनफॉर्चुनेटली एंड सैडली 1300 prisoners were there. Half of them were lying on the paths of their footpaths of the sides of their barracks. So the condition was quite miserable. As far as the legal framework is concerned, much needs to be done in order to form a proper transformation कि वो एक jails को rehabilitation houses या correction centers में turn करे, और इसके लिए we need to detect laws for amending and enacting.
though jail administration were trying their level best that we are satisfying the prisoners or inmates, but it was unsatisfactory. Now, the critical analysis which we extracted, the entire group, was that there was no proper uniform, overpopulated, gas and electricity issues were high at its rate, no educational setup, malnutrition and discrimination. Now, you must be thinking discrimination on the basis of gender or discrimination on the basis of caste. Discrimination on the basis of political status, discrimination on the basis of elite class. अगर अमीर बाप के बच्चा है कत्ल भी करता है तो वो खुल जाएगा, गरीब रुलेगा. Satisfaction of inmates. Females were 100% satisfied, males were 87% satisfied, and minors were 95% satisfied. This was actually the research conducted by us. But we, unfortunately, all the sad faces were showing satisfaction because of their deputy superintendent or the female deputy superintendent. They were having so much fear because of them, though we know they are not satisfied, but they were time and again saying, मुझ खुशहाल हूँ, यहाँ बहुत अच्छा सेटअप है, ये है और वो है. Now I would like to quote one of the famous saying of Malcolm X, that to have once a criminal is no disgrace, to remain a criminal is disgrace. हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि अगर कोई क्रिमिनल क्राइम करता है तो उसके पीछे बहुत रीजंस होते हैं. कुछ बच्चे सेपरेशन की वजह से एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ बच्चे पॉवर्टी की वजह से जाते हैं. अगर मैं उन हमारी सोसाइटी में उन क्राइम की बात करी हूँ जो रोज़ बरोज़ हर गली में. मैं उन क्राइम्स की बात नहीं करी हूँ कि जो हमारे पॉलिटिशियन करप्शन करते हैं. क्वेश्चन मस्ट बी अराइजिंग कि अच्छा वो तो भी क्राइम है, वो क्यों करते हैं. इट्स अनदर फेज ऑफ डिस्कशन. व्हाट आई एम ट्राइंग टू इंटेंड इज दैट कि जो ये स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं ये क्यों होते. देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न बिहाइंड एवरी क्रिमिनल. नो क्रिमिनल इज़ बोर्न इन देयर नॉट अ सिंगल पर्सन इज़ बोर्न क्रिमिनल बाय देयर बर्थ. दे आर सोसाइटी का और साइड फैक्टर्स बहुत होते हैं. और एक चीज़ मैं ये करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट हमारे डिफेंस पे इतना दे रहा है तो वेलफेयर पे देना चाहिए गवर्नमेंट को. Suggestions which we extracted, the entire group, was that the government of Balochistan should make laws for prisoners so they can spend their life in prison in productive way. Like वो ज्वेलरीज बना लें या कारपेट्स बना लें. मच में एक दफ़ा एक मैकेनिज़्म चला था कि कारपेट्स बनाते थे, ज्वेलरीज बनाते थे. फिर जब एक इंसिडेंट हुआ, आग लगी, आधे से ज़्यादा भाग, उनके बाद उन्होंने ये मैकेनिज़्म वो कर दिया कि हम लोग उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर सकते, विच इज़ अ कंप्लीट डिसग्रेस. Minors should be given a proper religious and educational worldly education कि वो अगर 17 या 16 साल की उम्र में कोई क्राइम करता है और 4-5 साल के बाद वो निकलता है तो वो ऐसे निकले कि वो कुछ सीख के निकले, बड़े मतलब और बड़ा क्रिमिनल ना बने. Jails shall turn into rehabilitation centers or correction centers, which I have already earlier said. NGOs का बहुत बड़ा रोल होता है. NGOs shall collaborate with all the jails. They should provide them political, social, religious and cultural teachings ताकि उनका जो रिफॉर्मेटिव प्रोसेस है वो चलता रहे. और यूनिफॉर्म होना चाहिए ताकि लगे कि सब एक क्लास में है. अपर लोअर क्लास स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स में हम यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं, ताकि हम ऑल जो है इक्वल लगे. फिर सिक्स्थ ऑफ ऑल, देयर शुड बी प्रॉपर मैकेनिज्म फॉर हेल्थ एंड मेडिकल, जो बिल्कुल नहीं था. अनफॉर्चुनेटली एंड सॉरी टू से, पार्डन मी फॉर दिस, जो उनका मेडिकल सेंटर था या जहाँ उनकी ट्रीटमेंट होती है वहाँ ड्रग्स की स्मेल आ रही थी. तो यहाँ इससे पता चल रहा था कि वहाँ इनका ट्रीटमेंट नहीं होता है बल्कि इनको ड्रग्स प्रोवाइड किया जाता है. टू अवॉइड माल न्यूट्रिशन, जितना खाना उनको दाल रोटी मिलता था उस हिसाब से तो एक इंसान का गुजारा नहीं हो सकता था. मॉर्निंग में उनको आधा कप चाय और आधी रोटी मिलती थी, तो जो डेली कंजम्पशन था उसका भी बहुत इश्यू था वहाँ. और एक चीज़ जो उनके हमें वहाँ के डीएसपी ने बताया था, उन्होंने कहा कि यहाँ जो है इंडोर गेम्स होते हैं जैसे लूडो वगैरह, आउटडोर गेम्स नहीं होते. सो आवर टीममेट्स आस्क्ड गुड क्वेश्चंस देयर, एंड वन ऑफ द क्वेश्चन दैट
आई एम रिकॉलिंग नाउ इज़ दैट कि सर क्यों आप आउटडोर्स गेम नहीं रखते इनके लिए, तो कहा कि नहीं मतलब ये एक दूसरे को ज़ख्मी कर देंगे या ये, तो सजेशन यही है कि आउटडोर्स गेम होनी चाहिए ताकि उनके जो फ़िज़िकल हेल्थ है वो अच्छा रहे। बाकी अगर कोई दोस्त किसी दोस्त को अच्छी बात भी बता लेता है तो इंसान के लाइफ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। सो मोटिवेशनल सेमिनार्स वहाँ होने चाहिए, लाइव होने चाहिए। अगर वो लाइव नहीं कर सकते, वहाँ एक टीवी भी नहीं था, वो टीवी पे या मल्टीमीडिया पे एक मोटिवेशनल सेमिनार, जो लोग रिलीजियस बिलीव के हैं उनको रिलीजियस तरीके से उनको मोटिवेट करना चाहिए, जो दूसरे बिलीवर्स हैं उनको दूसरे तरीके से मोटिवेट करना चाहिए था। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू।